Hello guys, welcome back to another fresh episode of Gadget 360 with Technical Guruji. And I mean, इस हफ्ते में Apple had their huge September event. हमको बहुत सारे नए gadgets मिल गए हैं और इनफैक्ट इसके अलावा भी बहुत कुछ है कवर करने को. I'm gonna talk about everything coming ahead. बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है and I'm sure for all of you gadget lovers, this time is the best time of the year because September and October, I mean in tech terms we call them Techtember and Techtober, you know, for the obvious reasons because of so much of tech. जितना ज़्यादा नया हमको अभी मिलता है experience of the नए iPhones और भी नए Google Pixel phones, बहुत सही टाइम है. इस एपिसोड में कुछ ऐसा ही एक्साइटमेंट है आपके लिए. देखते हैं आखिर क्या हुआ इस पूरे हफ्ते में. माय नेम इज गौरव, यू आर वाचिंग गैजेट 360 विद टेक्निकल गुरुजी. जल्दी से आगे बढ़ते हैं, चलिए शुरू करते हैं. Guys, as obvious, let's start with the news of the week to just know कि आखिर क्या हुआ in the world of gadgets. Nokia ने लॉन्च किया G42 5G मोबाइल. This mobile comes with a 90 Hz refresh rate in a 6.56 inch touchscreen display and ये पावर किया गया है एक octa-core Qualcomm Snapdragon 480 Plus प्रोसेसर से. GoPro ने लॉन्च किया है Hero 12 Black Edition. ये फीचर करता है HDR support for 5.3K and 4K videos, vertical capture mode, improved hyper smooth 6.0 stabilization and इसकी प्राइसिंग है 45,000 rupees for the basic version and 65,000 rupees for the special creator bundle. Blackmagic Design ने अनाउंस किया है Blackmagic Cinema Camera 6K. It is a new high-end digital film camera जिसमें एक full frame 6K सेंसर है, 13 stops of dynamic range. इसका लेंस माउंट L माउंट है. It has dual native ISO and it goes up to 25,600 for incredible low light performance. इसकी प्राइसिंग 2,38,800 है. Motorola has launched the Edge 40 Neo for its international market and ये इंडिया में 21 सितंबर में लॉन्च होगा. It comes with a MediaTek Dimensity 7030 system on chip and a 5000 mAh battery with 68 watts of wired fast charging support. इसकी प्राइसिंग 25,000 से नीचे होने का ही एक्सपेक्टेशन है. Guys, moving ahead with the top story of the week, let me teleport myself. मैं सीधा अपने स्टूडियो से निकल के चले जाता हूँ कुपर्टिनो कैलिफोर्निया, एप्पल हेडक्वार्टर्स पे. एंड आई वाज इनफैक्ट राइट देयर जब नए आईफोन्स एप्पल लॉन्च कर रहा था. लेट मी शो यू स्ट्रेट फ्रॉम कुपर्टिनो कि जो नए आईफोन्स और ये सब चीज़ें एप्पल ने लॉन्च की हैं, what has been the highlight इस पूरे लॉन्च इवेंट का. and you'll get the same flavor as if you yourself आप सीधा अपने घरों से निकल के पहुंच गए हैं एप्पल हेडक्वार्टर्स में. Okay, so guys, there you have it. मैं सीधा निकल के आ गया हूँ स्टूडियो से यहाँ पे at the Apple Park in Cupertino, California, and today was the big day, Apple's Wonderlust event. और इनफैक्ट हम सभी इस इवेंट का वेट करते हैं because you know, टेक दुनिया में अगर कोई सबसे बड़ा इवेंट होता है तो इट्स द सितंबर इवेंट ऑफ एप्पल. एंड टुडे वाज द टाइम जब एप्पल ने हमको दिखाए हैं नए प्रोडक्ट्स, द ऑल न्यू एप्पल वॉच सीरीज 9, द ऑल न्यू एप्पल वॉच अल्ट्रा सेकेंड जनरेशन. एट द सेम टाइम हमको नए वाले आईफोन भी मिल गए हैं. तो एप्पल वॉच एक नया अपडेट लेके आया है इन द फॉर्म ऑफ एप्पल वॉच सीरीज 9. सबसे पहला तो हमारे पास में एक नया पिंक कलर आ गया है, द ऑल न्यू पिंक एप्पल वॉच फॉर पीपल हु प्रेफर पिंक, लेट्स से. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं इंटरनल इम्प्रूवमेंट्स की, तो वी हैव एन ऑल न्यू S9 सिस्टम इन पैकेज चिप. और ये जो ऑल न्यू S9 चिप है ये हमको देती है और better kind of performance with even better efficiency. इसके अलावा the display on the Apple Watch Series 9 can now hit up to 2000 nits of peak brightness. So I mean bright outdoors अगर आप हैं तो still you will be able to see the display of the watch. यहाँ पे भी all new kind of system आ गया है so that Siri can now function without you being connected to the internet. इसके अलावा यहाँ पे भी ultra wide band वाला पूरा system आ चुका है, which simply means if you ever forget your iPhone somewhere, आप अपनी वॉच से अपने आईफोन को लोकेट कर सकते हैं. तो मल्टीपल न्यू अपडेट्स कमिंग टू दिस एप्पल वॉच सीरीज 9. इंडिया में जो प्राइस है इट स्टार्ट्स फ्रॉम 41,900 रुपीज. अगेन वी हैव मल्टीपल मॉडल्स, 5 कलर्स इन द एल्यूमिनियम,
3 new stainless steel colors, so you can choose you want a GPS watch, you want a cellular option, multiple सारे आपके पास में variety available है in the all new Apple Watch Series 9. Now moving ahead, हमारे पास में Apple Watch Ultra 2nd Gen भी आ गई है. तो यहाँ पे what we have is an updated processor, of course the same S9 chip similar to Watch Series 9 में जो है वही आपको मिलता है अभी Apple Watch Ultra 2 में. और यहाँ पे भी हमारे पास में for example the display is one of the major highlights because now it can hit up to 3000 nits of peak brightness, which is, I mean, Apple's brightest display so far in this, the Watch Ultra 2. But for a fact, let me tell you, वॉच को लेके जो एक मेजर अपडेट आया है, इट इज दिस, द डबल टैप. सो दिस डबल टैप एक्चुअली इज अ रियल गेम चेंजर इन अ वे दैट अगर आपका दूसरा हाथ बिजी है, स्टिल विद जस्ट वन हैंड यू कैन कंट्रोल द वॉच एंड ये प्रिसाइजली आपका जो ब्लड फ्लो होता है उसको ट्रैक करके रिएक्ट करता है. यू जस्ट नीड टू टच योर इंडेक्स फिंगर एंड थंब टुगेदर टू एक्टिवेट दिस डबल टैप. तो टाइटेनियम से बनी हुई एप्पल वॉच अल्ट्रा 2 जो है, इसकी प्राइस इंडिया में स्टार्ट होती है 89,900 रुपीज से. Then comes the big thing, the new iPhone 15 lineup. So guys, again as I said, मैंने आपको जो पहले दिखाया था वो सब चीजें सही हो चुकी हैं. Starting with iPhone 15 हमारे पास में नए नए कलर्स आ गए हैं. We have a pink iPhone now. So pink भी है, yellow है, then we have the green, blue and black. All iPhones now have a matte finish on the back. तो अभी अगर आप एक बेस वेरिएंट वाला iPhone भी ले रहे हैं, still coming with a matte finish. Edges are curved, feels comfortable to hold in the hand. यहाँ पे भी हमारे पास में USB-C पोर्ट आ चुका है. The camera on the iPhone 15 series starts at 48 megapixels now. तो जो पहले Pro phones में कैमरा होता था, now we have the same kind of camera experience even in the standard iPhone 15 and 15 Plus. इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तो performance wise we have Apple's A16 Bionic chip जो कि लास्ट ईयर iPhone 14 Pro और Pro Max में एप्पल ने यूज किया था. We have the same chip now in the iPhone 15 and 15 Plus. प्राइसिंग की अगर हम बात करते हैं, the starting price for the iPhone 15 in India is 79,900 rupees and for iPhone 15 Plus it's gonna be 89,900 rupees. Guys, now for the Pro models. The biggest change to begin with is कि अभी ये जो नए वाले Pro iPhones हैं, they use titanium for the frame. It simply means कि phones काफी ज़्यादा strong हो गए हैं. At the same time, they are even lighter. What we have is all new Apple's A17 Pro chip. This is based on 3 nanometers. So I mean, the performance is really up there. The efficiency is really fantastic. In terms of cameras, we again have a very advanced kind of a setup. But in the Pro Max, we have all new 12 megapixels camera with 5x optical zoom, which simply means कि अभी आप और better zoom enjoy कर सकते हैं. And I mean the performance, the way these phones are, yeah, it's all new. एक और चीज नई है, exclusive to the Pro models is this action button. जो अभी आपको पहले म्यूट स्विच मिलता था iPhones में, वो iPhone 15 में तो मिलेगा, but in the Pro models we have an action button जहाँ पे आप customize कर सकते हैं. If you want to use this button for, let's say, putting your phone on mute or ringing, if you want to activate the flashlight, आप वो भी कर सकते हैं. If you want to turn on the camera, तो आप वो भी कर पाएंगे. Basically, you can customize it with multiple actions, जैसा आपको चाहिए. With this all new action button, हमारे पास में USB-C पोर्ट भी है. Finally, on the entire lineup, I mean, even the camera, the way it behaves, you get multiple focal lengths starting from 13mm to 24mm to 28mm, 35mm, 48mm, all the way to 120mm. And one more fact कि अभी क्योंकि iPhones में हमको Type-C पोर्ट मिलता है, so you can simply charge your AirPods or Apple Watch directly from your iPhone. जो केबल है USB-C to C, आप सीधा अपने फोन से अपने एयरपॉड्स या वॉच को चार्ज कर सकते हैं. ऑन द गो आप उसको टॉप अप कर सकते हैं, which is quite unique in itself, all thanks to the potential of USB-C. Now you just tell me, which is your favorite pick. That's all from my side. Signing off from Apple Park. Back to the studio now. What an amazing experience, guys. I mean, I'm sure you all loved this coverage of the Apple event. और एक साथ जब इतने सारे नए प्रोडक्ट्स आ जाते हैं ना, the excitement is really up there. It's just time before I show you the unboxing of these new phones coming very soon, very very soon your way. And you just need to tell me which phone you want to see first. आपको पहले छोटे वाला 15 देखना है या फिर the biggest one,
मैं इंतजार करने वाला हूँ. You just need to write me at tg@ndtv.com. In the next episode, let me show you these devices really up close. See, I have done this. I'm sure you have done this. We all have done this while growing up, or even we do it today as well. हम अक्सर ना Xerox वर्डोइज यूज करते हैं बहुत कॉमनली. इसकी एक Xerox कॉपी, इसकी 2 Xerox कॉपी, 10 Xerox कॉपी. मतलब sometimes it's very easy for us to interchange the words Xerox and photocopy. हमको लगता है Xerox is a verb. But let me tell you, I mean, it's very rare that we know of this. Many of you might know this already. But Xerox is not a verb. It's essentially the name of the company जिसने ये पहले एक टाइम पे machines बनाई थी in the initial days. Xerox Holdings Corporation was the company, not a verb that we all might think. Did you know this? Let me know. Okay, so guys, I'm sure अभी तक आपको काफी मजा आ रहा है. The coverage of Apple, to be honest, is really going well. But अभी ब्रेक के बाद आपके लिए कुछ और exciting चीजें हैं मेरे पास में. So I'll see you right after this short break, जहाँ पे I'm gonna share some really important tech tips with all of you. Hello guys, welcome back after the break to Gadgets 360 with Technical Guruji, wherein I am Gaurav, aka Technical Guruji, and मैं आपसे भी बात कर रहा था ब्रेक से पहले about that Apple event, और मैंने आपको एक बहुत ही interesting trivia बताया about Xerox, but now it's time for me to share an interesting tech tip with you. बहुत बार ऐसा होता है, you just want to scan something, और उसके लिए आपको बहुत बार you think of downloading some app, और फिर वो ऐप में कई बार ads आते हैं. I mean, that experience is not really refined. But guys, did you know, if you have an iPhone, it is just a matter of couple of clicks to get the best scans of any document you want. You just need to go to the Files app, scan a document, and it's just one click. One simple scan using the highly efficient software, you are able to digitize any document you want. बड़े आराम से, right on your iPhone, in fact on your iPad as well, बिना किसी third party app को use किए. Again, it's time for my favorite section. I think yours too, जहाँ पे हम बात करते हैं in the segment Ask TG, about the tech queries that you have. और आप सभी जो questions भेजते हैं guys, at times it's really important for me as well, because I end up brushing up my own knowledge, और काफी मजा आता है whenever you discuss tech over Q&A. So अभी देखते हैं इस week में what all questions we have. My question to you is, I would like to buy a tab, but I have a very strict budget of 15,000 only. So which one would you suggest? Okay, so for 15,000, the good part is that we have some good tablets. Although personally, I would not recommend an Android tablet over an iPad, considering the ecosystem that we have, on the Apple side of things and the quality of apps. But because you have a limited budget, 15,000 में भी मार्केट में अच्छी ऑप्शंस अवेलेबल हैं. इफ यू सी द लेटेस्ट कमिंग इन फ्रॉम Realme और Xiaomi, let's say, there have been a few good models. Nokia and Motorola also have a good lineup. So आपको बस देखना है कि the kind of software you want, the kind of apps you want. Sometimes you'd want to prefer Motorola, let's say, or Nokia because of the clean interface. Xiaomi, you know how the UI is at times. So you can take your call depending on the brand you prefer. But yes, the best part is 15,000 में भी Android में अच्छे tablets available हैं. Let them come to the Indian markets first. So all these phones, really powerful, but the reality is कि ये phones अभी इंडिया में नहीं हैं, and I would not advise you कि आप इन phones को बाहर से import करो, because sometimes the software support is very limited. Sometimes, in fact, even the warranty, you would not be able to claim it in India. At the same time, all the hassle plus the customs and everything going along, मुझे लगता है कि you just need to wait till the time you see these devices coming to the Indian market, and उस time पे I'll be able to help you better.
Okay, so because you're shooting just on the phone and given how powerful जो भी नए वाले iPads हैं ये हो गए हैं, I would recommend कि आप Mac से iPad पे भी move कर सकते हो. Let's say an iPad Air with the M1 chip. परफॉर्मेंस आपको बहुत अच्छी मिलने वाली है एंड नाउ ऑन द iPad वी हैव द सपोर्ट फॉर फाइनल कट प्रो. इनफैक्ट अगर आपको यूज करना है तो यू कैन ऑल्सो ट्राई द LumaFusion ऐप और आपको एप्पल पेंसिल के साथ में एक अलग फ्लेवर मिलेगा एंड द iPads आर रियली केपेबल यू नो टू एडिट दीज वीडियोज शॉट ऑन द स्मार्टफोन्स. तो यू कैन गिव इट अ ट्राई यू नो एडिटिंग ऑन द iPad. Hello Technical Guruji. I'm thinking of buying a second-hand phone from the market. Do you think it will be safe? And what should I be keeping in mind before buying one? It would be safe as long as you do it the right way. So the first thing is always ask for the invoice and get it double checked just to make sure that yes, this phone is an authentic purchase, because you do not want to buy a phone that's stolen. So as long as number one to begin with that आप sure हो चुके हैं कि वो phone जो है you know is a legit device, it's not stolen. That's number one. Number two, depending on the brand or the model that you are buying, there are multiple applications sometimes, and in fact there are sometimes you know inbuilt tools to test and verify all the hardware or the software, let's say, of that phone to make sure that it's in good running condition. So you know you can see for the Wi-Fi, Bluetooth, camera, vibration, speakers, display, battery, everything. और इन सब चीज़ों के लिए there are multiple apps available. तो उसके through you can just get the phone checked. And then if you see that yeah you're getting a good value, go ahead with the purchase. Hello Technical Guruji. Growing up I have always been fond of foldable phones and now I would like to buy one just for the nostalgia factor. So which one would you suggest? I mean it depends on the kind of foldables you were in. अगर आपको वो communicator वाला style पसंद था while growing up तो अभी तो we have multiple folding phones. If you loved the flip style let's say of the Moto Razr तो flip phones भी हैं. सो मार्केट में ऑप्शंस बहुत सारे हैं. इट ऑल डिपेंड्स ऑन व्हाट एग्जैक्टली वुड यू प्रेफर. क्या आपको एक कम्युनिकेटर स्टाइल का डिवाइस चाहिए काइंड ऑफ यू नो टू डू बिजनेस ऑन द गो, या फिर यू वांट समथिंग मोर कूल एंड मोर फंकी इन फॉर्म ऑफ अ फ्लिप फोन. वी हैव बोथ द ऑप्शंस. Okay, so guys, that's all for this week. I mean, amazing episode and I'm sure you all loved it because मैं सीधा स्टूडियो से निकल के Apple headquarters पहुंच गया था. अभी नए iPhones का पूरा सीजन आ चुका है and I'm gonna bring some amazing cool stuff around these new iPhones right in the next episode. अभी के लिए इसको इतना ही रखते हैं. I'm gonna see you next week. Have a good day.